rural development. Rural development is the crux of the Indian development strategy 2011 1 census. More than 70% of Indian population lives in rural area. It is pertinent to cure the view of the Mahatma Gandhi in the regard. The soul of India lives in the village, and 60% of Indian population depends on the agriculture. 15% of the GDP of the country, and the development rural life is prerequisiting for the acceleration of the pace of the overall socio-economical development. Rural development is defined as a number of the scholars and experts. One of the definition promulgated the Robert Chamber, and he observed that rural development is a strategy to enable a specific group and gain for themselves and evolve the helping the poorest amongst they seek the livelihood. So rural development focus on the poverty and inequality should be removed economical life, and in this 92 May World Bank redefined the rural development as a strategy to improve the socio-economical life including the small marginal farmer. In system of the world, rural development can be defined as a total development of the rural system through the integration of the spatial functional aspect, and it is continuous process aiming at total development of the rural. It focuses on the development of the whole economy, primary, secondary, tertiary. Beside the human resource development, infra development, it is result of the interaction between the subsystems and including the physical, social, economical, and environment approach of the operational design bring the desired positive change in the life. The absent poverty is ubiquitous in the rural areas, and now it is continuous. Even the major reason of the underdevelopment of the rural is like जमींदारी सिस्टम थी पहले, बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, and the farmer was given the rich and wealthy Indian who are the popularly referred as जमींदार, उनको टैक्स देना होता था. बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है. सो सोशल एंड फिजिकल इंफ्रा इज अ की फॉर द रूरल डेवलपमेंट. there is a lack of development of social physical infra in the rural. This is can attribute in the other words the lack of development in terms of the infra. The social infra is education, health होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, पोर्ट्स आर फॉर द अंडर डेवलप्ड, एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स है जैसे कि ड्रोट एंड साइक्लोन्स एंड फ्लड प्रोन एरिया, डिजर्ट्स एंड ऑल दैट. सो हमने कुछ इनिशिएटिव लिए. पहला है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगा डैम, दैट वाज बाखरा नागल, सतलज, नागार्जुन वगैरह. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड द इंटेंसिव क्रॉपिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज द यील्ड, एंड द रूरल डेवलपमेंट आर सोड बाय द नंबर ऑफ लेजिस्लेशन. लैंड रिफॉर्म आए थे, लैंड सीलिंग आया था, बॉन्डेड लेबर 1973, अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट की बात की गई. Number of the programs and policies were there like integrated rural development, drought prone area, intensive agriculture. मशीनरीज के लिए यहाँ पर सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स, वुमेन एंड एग्रीकल्चर. सो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इरीगेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन 1982. It was renamed the Department of Rural Development. That was same year the reached to the Department of Rural Development, Ministry of Agriculture. Okay, so this now Ministry of Rural Development, the rural development program become a very vibrant and active in this space. There was a Ministry of Rural Development, Department of Rural Development was a NREGA, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूरल हाउसिंग, भारत निर्माण एंड पूरा. एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेलरेटिंग ड्रिंकिंग, ड्रेनेज, सीवेज प्रोग्राम, नेशनल स्पॉन्सर्ड टोटल सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड द स्वजल. एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के अंदर साइंटिफिक कीपिंग ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स, एंड रोड प्रोन एरिया, हिली एरिया एंड द हरियाली. Ministry of PRI is a crucial role for the rural development. It's a nodal agency for democratic decentralization. Ministry of Social Welfare, that is for the women, SC STs के लिए बनाई गई है. And Ministry of Health and Family Welfare, that was for the ministry in charge of the health. It is also responsible for all the government programs relating to the families, and Ministry of Health for the family welfare hold the cabinet rank of the members. And Department of Health, Department of Family Welfare, Ayush, Ayurveda, Naturopathy, it has been regarding the publishing this reports. उसके बाद में आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट वाज आल्सो फॉर्मुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स फॉर दिस. एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट वाज 174 अमेंडमेंट हुए हैं. एंड इट वाज क्रिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट वाज इन 1985.
सितंबर में, ठीक है। और एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन बिजनेस एक्ट, उसके तहत डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो था 2010 में आ गया, and this is cabinet ministry of Sharad Pawar, and this ministry look after the availability of fertilizer pesticides। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, एजुकेशन एंड हस्बेंडरी तीनों आते हैं। इन एडिशन टू द मिनिस्ट्री देयर इज आल्सो सम टिपिकल मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। अगला है प्लानिंग कमीशन, तो ये एक स्टाफ एजेंसी है। ऑल द प्रोग्राम एंड पॉलिसी दैट आर टेकन टू द कंसर्न। इसके बाद है रीजनल लेवल कमेटी, जैसे कि प्लानिंग कमीशन। देयर आर आल्सो ए नेशनल लेवल कमिटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस इज मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इन द elaborate networks. Now there is a machinery for the rural development and the state level. So IRDP and central machinery is for the rural level, so this vary from state to state. एंड इसके बाद मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप प्राइमरी इंगेज विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। सो रूरल डेवलपमेंट प्ले क्रूशल रोल इन द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे। डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया था, दैट वाज द टर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नलिया द रूरल डेवलपमेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द GVK Rao कमेटी। GVK Rao कमेटी आई थी 1985 में। So it is state has created post state development commissioner to coordinate the development activities, and that was a nodal office to the handle the overall development administration and state for the development. In Bihar, deputy development commissioner exclusively charge of the development activities. GVK Rao was appointed by the GVK Rao committee 85 to suggest the way for revamping the rural local government. The committee made the following: the district level body, that was Jilla Parishad, should have the pivotal importance. Some of the planning function and the state level should have transferred to the district level. The post of district development commissioner should be created. He should act as the chief executive officer of the Jilla Parishad. This respect GVK Rao committee was report in the 1986 and different from the Dantewala, that was block level committee in the 1978, and the Hanumanta Rao committee report, that was district level 1984। तो दंतेवाला की 78 में है, हनुमंता राव की 1784 में है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से रिलेटेड। एंड ब्लॉक लेवल कमेटी, दैट वाज 1978 हनुमंता राव, एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग दंतेवाला का जो प्लानिंग था 78 में ही था। एंड GVK Rao कमेटी, दैट वाज इन 1986 में आ गई थी GVK Rao कमेटी। एंड हनुमंता राव कमेटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, दैट वाज इन 1984। Hanumanta Rao was 84. So Hanumanta Rao committee was differ in the respect from Balwant Rai Mehta administrative reform administration of the India, and GVK Rao तो 86 में है, ठीक है। and Dantewala in the 78, Hanumanta Rao in the 84, and that was Ashok Mehta committee। finally GVK Rao committee आई, and which is recommend the reduction and development role of district collector and assigning a major role for the Panchayati Raj। State planning boards and the commission, state planning boards and commission, which is assisted by the various ministry engaged. These boards can commission or review the monitoring the working of the rural development and formulating the plan. A state level committee is beside this ministry, state district level commissioner and the state level boards and commissioner. There is also the state level committee, which is the engaged in the rural development. Machinery for rural development district level, that was district administration rural development headed by DC, and the role of this district officer got diluted. Now 73rd amendment, in some district development the district development officers exclusively officers for the development, and the Jilla Parishad responsible for the rural development, and Jilla Parishad is assisted by district development officer. There is also many technical officers who play very block extension, and in this integrated rural development program was district rural development program in 1980, concerned the dealing with the centrally sponsored anti-poverty, and interact with the Ministry of Rural Development directly with the diluted the many state responsibility. Block development officer, that was also in 1952 में community development program आया था। An extension officer, the extension officer came into existence national extension scheme in 1953, and पंचायत समिति। एंड उसके बाद में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के वर्क क्या है: ट्रेन करना रूरल पीपल को, क्रिएट करना अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग नो हाउ, असिस्ट करना वेरियस एक्टिविटीज़ में,
And DRDA, that was District Rural Development Agency. It was a key instrument and agency for the government implementation of this. Each of the district registered under the Society Act 1958, and the district collector is the chairman of the DRDA. And below him there is the additional collector, the project director, who is either IAS and the senior member. Planning team, that was assisting the economical and the credit planning. Governing body, that was a member of the governing body may either increase, decrease per instruction of the government. The governing body is generally constituted district collector, project director cum additional collector, and MP, MLA, district, Jila Pradmukh. 2 consecutive weaker SC/ST, and 1 was the rural and women. The annual action plan was prepared by the DRDA, and all projects and scheme for development act approved by the body. Review the progress and make the meetings and improve the sectoral work. Machinery for the rural development and Panchayati Raj. The multi-purpose village level workers होते हैं grassroots level पर. So PRI, there is a 3 institution, that was a village में पंचायत, ग्राम सभा and the plan पंचायत committees भी होते हैं, ठीक है. So रूरल डेवलपमेंट में इसमें IRDP, पोस्ट IRDP एंड कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इसके लिए एक 6 ईयर प्लान आया था 1980 से लेकर के 86 के बीच में, ठीक है. तो दैट वाज अ 6 ईयर इनिशिएशन. इसका हुआ था 1978 में. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1978 से. और उसके बाद में फिनोमेना ऑफ द रूरल डेवलपमेंट वाज ट्रेस द कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 में आया था. एंड दिस वाज प्रोग्राम स्टार्टेड रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णाचारी कमिटी. Krishnachari, according to the program, district was divided. The community development blocks and the community development blocks around 300 villages थे. 1953 में नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम आया एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे यहाँ पर, जो कि विलेज लेवल पर वर्कर्स होते थे. BDO was the key for the player of the development, and that was with this extension of the office, since district officer was the district collector. Community development, national extension, targeted area development, integrated approach for the IRDP, and the uniform approach for the equal treatment of the all section. Focus on the agriculture and the most important medium. Solve the problem, attention, address the problems, and rich and poor जो भी हैं. And it is serious now. 1950 it was realizing there was a very little progress, but now there was a center shifted block, the rural and administration. In 1957, Balwant Rai Mehta committee was set up the review of the administration, and the committee observed that absence of democratic participation, it is near impossible to achieve the desirable. So Balwant Rai Mehta committee आई थी, and this committee was recommendation was a 3-year system, a 3-tier system of the local government of the panchayat, Jila Parishad, district level, panchayat samiti at intermediate level, and gram panchayat. So philosophy behind this was to shift the decision making into closer to the people. In this effort, they invites the increase the state participation of the third 5-year plan, provided responsibility. Also, various organizations at Panchayat and the Jila Parishad were as a block and district level too. For this prima facie arrangement किया गया था कि to enhance the participation and गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन दिस अंडर दिस. साइड बाय साइड यहाँ पर कुछ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 19 intensive agriculture area program, and the purpose of the making the country self-reliant. And beside this, green revolution was also there, and there was a growing discontent but leading to the creation of 2 agencies, small farmer development agency and the marginal farmer agriculture. And by this, many institutions like project evolution and the study of the development of the this region was a hilly desert drought prone area जो था. यहाँ पर भी thus a very approach of the treating every region and every section of the society equally. 5-year plan 1974 में target and the based approach, the wage and self employment system was establishing. ड्रोट प्रोन एरिया वाला 1972 में आया था. कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974, डिजर्ट डेवलपमेंट एरिया 1977, ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया के लिए भी प्रोग्राम आया था. स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी दैट वाज 1969, मार्जिनल फार्मर 1969, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980, development of the women and child development. These programs were mostly launched 1970. Despite their program, the subject, the poverty remained in the rural area, and there was a chronic unemployment also. So, order to address all these shortcomings, Government of India introduced the integrated approach called the Integrated Rural Development Program. ये कब आया था? 1978-79 में, ठीक है.
नाउ 17 एंड इसको ऑल ओवर कंट्री में टेकन अप किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 80 के अंदर, 1980 में. So integrated rural development is based on the historical integrated approach for development, not segment but an integrated in terms of facilities, resources, activities, and it was so target was approaches and not restricted to agriculture alone but was to open the eyes of the villagers to the face of the avenues, and this was a real implementation of this district level, and they are the oversee the evaluate the development activities. And now there's a reason behind the MP and MLA were committed to making the integrated approach, and concerns are about the activities, and it is would have a successful if it is adopted a coordinated approach of the expertise and authority, and this is the continuously IRDP's disintegrated approach. But now review the conducted after the review the certain changes were given, and 73rd amendment was a liberalization भी लाया गया. 73rd amendment of PRI was established the bringing the democratic decentralization and a district planning committee, establishing the integrated approach village and gram panchayat along with the gram sabha. ठीक है. Now the liberalization is a great impact on the rural development, and the impact was felt the rural development such as the agriculture, education, and this influencing idea was introduction of the private players. Chopal, Hindustan. Now, Mr. Swaminathan Research Foundation, that was the Karnataka, spreading about the take care of the rural community information center, that was Assam, and यहाँ पर रोगी कल्याण समिति मध्य प्रदेश में आई थी. And contemporary status of the rural development administration was development administration has become a participation empowerment of the self-help group. In order to understand the contemporary status of rural development, understand the important flagship scheme, the Indira Awas Yojana and Pura Bharat Nirman, Manrega. Indira Awas Yojana, that was in 1985, and Rural Development Employment Guarantee, and continued to the Jawahar Rozgar Yojana 1989, and now there was the objectives of provide the grand construction for the houses. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी यहाँ पे 75 से लेकर के 25% का रेशो है इंदिरा आवास योजना में. ठीक है. एंड बजट में टोटल लोकेशन दिया गया है 10,000 करोड़ का. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में आई थी 25 दिसंबर. ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द ऑनलाइन मैनेजमेंट होगा यहाँ पे सारा GIS सिस्टम, गवर्नेंस डिपार्टमेंट भी बनाया गया है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर ऑल वेदर, जितने भी रोड्स होते हैं such as habitations and the population 1000 person जहाँ रहते हैं, and the all unconnected habitant जहाँ के 500 person रहते हैं. यहाँ पे 2007 से अप्लाई किया गया. The construction of the have greatly benefited prior the farmers को, then it had led to the better transportation, value additions, and roads have made the easier for the जितने भी farmers थे. However, despite of this percentage unconnected habitation decreases 37% to 29%, and the quality of the major portion of the roads is doubtful, but still this means that a considerable share of the roads are first half of now यहाँ पर अच्छे से रोड का कंस्ट्रक्शन हो पाया. प्रोविज़न फॉर द अर्बन एमिनिटीज़ इन द रूरल एरिया, पूरा प्रोग्राम आया था 2004 को. एंड प्रोविज़न ऑफ द अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया स्ट्रेटेजी टू रूरल डेवलपमेंट ऑफ APJ अब्दुल कलाम ने इसको फ्रेम किया था. पूरा प्रपोज द अर्बन इंफ्रा फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रूरल हब्स. The main objective to reduce the rural-urban migrations, to bring rural-urban divide, to provide the balanced socio-economical development, agri-service and manufacturing, increase the purchasing power, increase the per capita income, ensure the India was getting the amenities, controlling the migration. So this was need for the all those services which are present. It is not economical feasible, but therefore the distributions होता रहता था यहाँ पे. भारत निर्माण आया था 2005 और 6 में, and that was the it was the overarching program to build infrastructure. It is the time-bound business for the implementing partnership with the state Panchayati Raj. This program was a 6 component, that was the irrigation, connectivity, housing, water, electrification, and the telecommunication. And the program invises the village electricity, every habitation of 1000, and that was will all weather roads and have a safe sources of domestic water connected to the telephones वगैरह. Bharat Nirman has done the commendable work in the 61 lakh of the dwellings, and now there was 50% road connectivity. दलित living जो कि है 10 million जितने भी है उनके लिए भी जो भी है पक्का हाउस वगैरह, that is 7% achievement target हो गया है. Villages connected to the electricity supply,
rural telephony, 10% of the village calculators require telephone connectivity, 84% covered for this, मतलब ये सारा कुछ हुआ। देन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था, 18 स्टेट्स को कवर किया गया था, अभी तो ज़्यादा हो गया था। मिशन ऑफ एग्रीकल्चर कमिटमेंट टू द रेज द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ 0.9 से 2 से 3% ऑफ द GDP लाना है। एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस आयुष इनटू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ एंड द डिटरमाइनिंग द हेल्थ सैनिटेशन हाइजीन ड्रिंकिंग वाटर। मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस द इन्फेंट mortality एंड maternal mortality, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करना, इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। सो दिस नंबर ऑफ द एलिगेशन MMR एट TFR को कम किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा 2009 में आया था, एंड दैट वाज द वे द फर्स्ट टाइम मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन यहाँ पर आ गया था। ठीक है, द जॉब कार्ड बनाए जाएंगे 15 डेज तक। द वर्क शुड बी गिवन टू द एडल्ट सिटीजन ऑफ 15 डेज, 50% वर्क इम्प्लीमेंटेड पंचायत, मिनिमम 100 डे वर्क दिया जाएगा। द वेज शुड बी पेड विद इन द वीक, द वेज मेल एंड फीमेल का इक्वल होगा। द वर्क शुड बी आइडेंटिफाइड विद द ग्रामीण पंचायत ओनली। एंड इसके बाद मनरेगा हेल्प करेंगे हम मास माइग्रेशंस को कम करेंगे, सर्व्स द डिपेंडेंट सेफ्टी नेट अनएम्प्लॉयड जितने भी हैं। सम कमेंटेटर्स इवन कंक्लूडेड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल असाइड बाय द रूरल यूथ जितने भी हैं उनको हेल्प किया जाएगा फॉर द सस्टेनेबल एसेट एंड कॉन्फिडेंस लेवल यूथ्स का बढ़ना। मनरेगा हैज़ गिवन द पीपल लार्जेस्ट इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, वर्क दिया गया, प्लेंटी ऑफ डिग्निटी मिली उनको, they fight battles including the system of operations and have no choice but acquaintance of the forced labor करते थे पहले। now there is a unemployed are becoming worker and worker raising issue of the citizenship। so however program has not been without the criticism, अभी भी criticism है, denial of the wages, delay payment, non payment, unemployed allowances and the corruption and wastages, but still social audit की भी problem रही है यहाँ पे। बट वर्किंग ग्रुप का क्या रिकमेंडेशन से 6 वर्किंग ग्रुप्स होने चाहिए। नरेगा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी पुट इन द पब्लिक डोमेन में इनकी इन्फॉर्मेशन हो। लार्ज स्केल अनचेक करप्शन जो है इसको ठीक करना है। अरुणा राय ने भी कोशिश की थी। एंड द वर्किंग ग्रुप चेयर्ड बाय द जॉन डेरेज रिकमेंड दैट द वेज ऑफ द वर्कर अंडर दिस स्कीम शुड बी लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ अब है हमारे पास में व्हाट अबाउट द एसेट। मनरेगा इज द मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री digging the hole, several thousand water harvesting structures, rural road connected, poorest, most accessible, but now there's a families have the converted the wasteland into the productive plots without the meaningful evaluation। it's not possible कि ये स्कीम पूरी हो जाए। if it is benefit the rich as asset is called the infra and it is used for the poor also। now effect of the figure 21 millions जो हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं 2006 तक। देन द एवरेज वेज पेड बाय द पर्सन वाज 2006। द सेंट्रल बजट वाज अलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द स्कीम इंक्रीज किया गया यहाँ पे। एंड अब है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, ओवर 5 करोड़ वर्कर अंडर द स्कीम आर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर एंड 17 to 30% इज द वेज इंक्रीज हुई है उनकी लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बजटरी प्रोनाउंसमेंट रियल वेज हैज़ नाउ बीन लिंक्ड विद दिस। सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई गई है एक, और मनरेगा जो है ना इसमें लोवेस्ट मिनिमम वेज दिया जाता था, अभी 117, अभी तो ये बढ़ गया है सारा वेज वगैरह। तो नेक्स्ट हमें देखना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आई थी एंड इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। दिस स्कीम इसेंशियली फॉर द प्लान प्रोवाइड द स्टेट एंड जितने भी ऑटोनॉमी टू ड्रॉ अप द प्लान्स फॉर इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो दिस वाज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। पंचायती राज क्या होता है। सो पंचायती राज के अंदर एक ग्राम पंचायत होगी। दिस इज सेकुलर इंस्टीट्यूशन विच टेक केयर ऑफ द वेरियस लेजिस्लेटिव जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अफेयर्स ऑफ द विलेज। ठीक है, कास्ट पंचायत में सारे कास्ट के नॉर्म्स होते हैं, और साउदर्न स्टेट में कुछ पंचायत्स होती हैं जो कि कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पैन इंडिया फिनोमिना है। पंचायत में जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाता है। तो ये इंडिजीनियस भी है। पंचायत एग्जिस्टेड थ्रू आउट द मुगल पीरियड एंड नाउ देयर वाज द पंचायत इज एन इंडिजीनियस गवर्निंग इंस्टीट्यूट फेस्ड बाय द थ्रेट बाय द ब्रिटिश रूल। The British tries to overhaul administrative system in India on the basis of the modern law framing by the British. These modern laws were adverse impact on the PRI.
तो 1987 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया and this got extended. However, there was a not elected body. The local function were undertaken and now 26 में municipal corporation established in the Bombay and the Calcutta. 1957 में British felt that need for bringing about the local administration. They have the financial administrative control of the political character. Lord Mayo का 1817 and according to the Mayo, majority of the member were the appointed by the local bodies and meanwhile the British were reeling the deep financial crisis result into the administration based on the grassroots level and now there was a famine commission was also there. The background of Lord Ripon resolution was a local self-government and that was considered to be the Magna Carta and this resolution was provided establishment the local board for the large elected non-official members and this resolution was against the ethos. There was a steep opposition from the British and progress is lined with the resolutions of the 1819 and 1882. In 1906 the Congress under the leadership of दादाभाई नौरोजी इसने कुछ गोल दिए थे. रॉयल कमीशन वॉज डिसेंट्रलाइजेशन इसमें 1909 में हाईलाइट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ द पंचायत. इंडिया एंड ऑल्सो एलॉबरेट फर्दर द रिपॉन रेजोल्यूशन. Finally, the Mentos Chelmsford reform that was took into the towards the local self-government. Under this scheme, self-government was transferred into the subjects. The most important steps towards the self-government was the Government of India Act introduced the provincial autonomy most of the elected government and now local self-government. Meanwhile, this 1939. The village panchayat was an ideological framework for the national movement and interdependence. Mahatma Gandhi and the Bhimrao Ambedkar was given this view. The Ambedkar was the opinion that panchayat have always been a reunion in the India. It is surprising those supporting the democracy, freedom at the village level. What is the village panchayat? Village panchayat is the heaven of the parochialism and the ignorance, communalism, narrow-mindedness. I am happy that Constitution Assembly has chosen the individual, not the village, and ensured the village to Ambedkar is a platform for inequality. Gandhiji, on the other hand, altogether different notion about the village panchayat. Any village can be republic. A village should strive to be united, the sufficient self-ruled, and the power should be flow from the bottom to top, and ripple spread out. So this concept of Gandhi was known the oceanic circle. Thus, there was an argument of the administration individual panchayat, and Ambedkar prevailed. However, the respect of Gandhiji provision included the Part 4 of Constitution. Article 40, the state should have the step to organize the village panchayat endowed with the power of authority of necessity enabled to the function of the self-government. After the independence, involvement of the people of the development grassroots level, but the Panchayat Committee and the Community Development Program launched in the 1952. Community and the block program, there was a second statement was given national